Hello everyone, welcome to my channel Hindi CBC Classroom. Please subscribe to my channel and hit the bell button next to it so that you will get notification whenever I post a new video. I have created separate playlist in my channel for each and every class separately. So please check the description box below and select accordingly. So let's start today's topic. Today's topic is Class 5, Chapter 10, एक दिन की बादशाहत. That is one day kings, a one day king. बादशाहत means a life of a king. आरिफ सलीम चलो फ़ौरन सो जाओ. आरिफ सलीम come on, go to sleep immediately. अम्मा की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे. Amma's voice will be heard at the same time when they will be singing qawwali with their friends. फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती. जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया. Or else in the morning, elder sister would wake them up with a shrug. Get up early, it's school time, when they'll be dreaming of eating ice cream with great fun. दोनों की मुसीबत में जान थी. So both of them were troubled a lot. हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार. All the time they had restrictions, all the times arguments and orders. So they were very fed up. अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे. So they could not do anything on their own. Chew bhi means even they could not speak on their own. कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते. चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह ट्राई जाता है. So when Arif was in a mood to sing, brother would scold him. Why would you be silent or not? All the time making noise just like a frog. मेंढक मीन्स फ्रॉग. बाहर जाओ तो अम्मी पूछती है बाहर क्यों गए. इफ़ वी गो आउट देन अम्मी वुड आस्क व्हाई डिड यू गो आउट. अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे. अरे रज़िया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे. इफ़ वी स्टे इनसाइड देन ग्रैंडमा वुड स्टार्ट शाउटिंग ओ गॉड माई ब्रेन इज़ बीइंग टॉर्न बाय द नॉइज. ओ रज़िया प्लीज़ शो दिस किड्स आउटसाइड. जैसे बच्चे नहीं न हुए मुर्गी के चूजे हो गए. ऐसे वी वेर नॉट किड्स बट चिकन्स. दे आर शूइंग अस अवे. दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से निकलने की तरकीबें सोचा करते. सो व्हाट दिस टू किड्स विल डू, वी वुड स्पेंड 2 hours थिंकिंग ऑफ द वेज टू एस्केप फ्रॉम दिस रेस्ट्रिक्शंस. उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी ही थी. सो एवरीवन इन द हाउस हैड एनिमिटी विद बोथ ऑफ देम. लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दस्तखत पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाएं. So they were feeling like all of them are becoming enemies to them. They don't like them at all. So both of them made a plan together and submitted in the Abbas court that one day they should be given all the rights of the elders and all the elders should be considered as kids. They should not have any right. So that was their request or submission. कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की. सो हु इज सेइंग दिस. अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई. सो व्हेन शी हर्ड ऑफ दिस शी सेड नो नीड टू क्रिएट सच हसल एंड ऑल. अम्मा स्कोल्डेड आउट ऑफ हर हैबिट. आदत के अनुसार मीन्स आउट ऑफ हर हैबिट. लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे. बट डोंट नो इन वॉट काइंड ऑफ मूड वॉज अब्बा, बिकॉज आफ्टर हियरिंग दिस he agreed to it. But not only he agreed to it but also agreed that
both of them will get all these kinds of right they mentioned tomorrow itself. अभी सुबह होने में, so they made plan that not from tomorrow, only for tomorrow, all the elders right will go to these two kids, and all elders will be considered as kids, so they have to listen to them. अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला. झिंझोड़ डाला मीन्स ही श्रगिंग और शेकिंग हर. So it was just a few hours in the morning, but Arif shrugged Ammi and woke her up. And what he said, Ammi jaldi uthiye, नाश्ता तैयार कीजिए. Ammi wake up fast and prepare breakfast. अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद कर सो रहे. झापड़ रसीद कर मीन्स will give one slap. अम्मी wish to slap them and she wants to go back to sleep. मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीन जा चुके हैं. But then she remembered, what she remembered, that today all her rights have been taken away. फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया. And then grandma, after reciting her morning prayers, Dadi's grandma started taking her medicines and was drinking badam harira. Badam harira is just like a badam milkshake. They'll put some rice and badam and milk and all. They'll make a healthy drink with that. Healthy drink with the badam. तो आरिफ ने उन्हें रोका. तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा. So at that time when she was drinking badam harira, that is badam milkshake, Arif stopped her and what he said, oh God grandma, how much harira will you drink? Your stomach will burst. और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए. And hearing this, grandma raised her hand to beat. नाश्ता मेज पर आया. Breakfast arrived at the table. तो आरिफ ने खानसामा से कहा. खानसामा मीन्स कुक. तो आरिफ ने खानसामा से कहा. सो आरिफ सेड टू द शेफ, अंडे और मक्खन, अंडे मीन्स एग, मक्खन मीन्स बटर, अंडे और मक्खन वगैरह वगैरह मीन्स एक्सेट्रा हमारे सामने रखो. पुट द एग्स एंड बटर इन फ्रंट ऑफ अस. दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो. एंड ओट मील एंड मिल्क बिस्किट्स, those all items give to others. आपा ने, आपा मीन्स एल्डर सिस्टर, आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा. एल्डर सिस्टर स्टैर्ड एट देम विथ एंगर. मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह हर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी. बट she stared at them with anger, but she was helpless because today she could not grab each and everything for herself as usual. सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका. When everyone sat down, सलीम interrupted अम्मी. What he said, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं. पान means betel. So अम्मी, just look at your teeth, how dirty it has become from eating betel leaf. मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा. So what she said, I have already brushed my teeth. Ammi tried to avoid that conversation. नहीं, चलिए उठिए. अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा लिया. So what he said, no, get up. Ammi had already started eating. निवाला तोड़ लिया था means she had already took the first bite of her. But Salim forcefully grabbed her shoulder and pulled her up, and he what he did, अम्मी को घुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े. So seeing Ammi, that is mother, go into the bathroom, everyone started laughing. जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे. Same like everyone would laugh when Salim was forcefully sent to the bathroom daily. The same like that they also laughed because usually
Amma will send Salim saying that go to the bathroom and brush your teeth properly. Now today Salim was telling Amma to brush her teeth properly. फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा. Then he turned towards अब्बा. अब्बा is father. ज़रा अब्बा की गत देखिए. Now look at अब्बा's condition. बाल बड़े हुए, शेव नहीं की. His hair grew but he did not shave. कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले. He had wore clothes yesterday and today he has made them this much dirty. आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? After all, how many clothes will be made for अब्बा? यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया. Upon hearing this, अब्बा laughed out loudly and he was in a very bad condition after laughing so hard. आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे. नकल मीन्स मिमिक्री और imitating. Today how these two kids were mimicking everyone perfectly. मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए. शर्मिंदा मीन्स embarrassed. So but then he was really embarrassed seeing his clothes. थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे. So after some time, after a while, when Abba was sitting among his friends and reciting his new ghazal loudly, enjoying it, what happened? तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा. बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गई. So Arif again shouted, "Stop it, Abba! Go to office immediately. It's already 10 o'clock." So they were imitating their elders. चुपचाप. अब्बा डांटते डांटते रुक गए. Shut. Appa was scolding but he stopped then. बेबसी से गज़ल की, बेबसी मीन्स हेल्पलेसनेस. बेबसी से गज़ल की अधूरी, अधूरी मीन्स इनकम्प्लीट पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए. सो बाइटिंग हिज इनकम्प्लीट लाइन ऑफ गज़ल इनसाइड हिज माउथ विथ हिज टीथ, टैपिंग हिज फूट, अप्पा हेल्पलेसली फॉलोड आरिफ. रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना. अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले. So Razia, give me 5 rupees, Abba said, getting ready to the office. 5 रुपये का क्या होगा? कार में पेट्रोल तो है. What will you do with 5 rupees? There is already petrol in the car. आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी. जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो. So Arif bluntly mimicked or imitated Abba Jan, just like Abba would say, "What you'll do with extra money? You have already taken pocket money." So this time was Abba's chance. थोड़ी देर बाद खानसामा आया. The chef came. After a while, the chef came. बेगम साहेब, आज क्या पकेगा? So he asked Ammi, that is Begum. बेगम साहेब, what will we cook today? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन. अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया. सो शी स्टार्टेड सेइंग एज पर हर हैबिट, पोटैटो, मीट, कबाब, चिल्ली करी. नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी. नो, दीज थिंग्स वोंट कुक टुडे. सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी. सो सलीम केप्ट द बुक असाइड एंड इमिटेटेड अम्मी. आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ. टुडे मेक गुलाब जामुन, कैरेट पुडिंग एंड स्वीट राइस. लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएगी? बट हाउ विल वी ईट रोटी विथ स्वीट्स? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी. शी कुड नॉट कंट्रोल एंड हर कंट्रोल और शी कुड नॉट बी पेशेंट इन एनी वे. जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं. Just like we eat roti with chilli curry every day. Like that you also eat one day roti with sweets. दोनों ने एक साथ कहा. Both of them said together.
दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी. On the other hand, other side, grandmother was quarreling with someone. ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाई दे रही है. ओहो, ग्रैंडमा इज मेल्टिंग माई माइंड विथ हर नॉइस. आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा. सो आरिफ सेड जस्ट लाइक ग्रैंडमदर, होल्डिंग हिज हेड इन बोथ हैंड्स. इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़े हैं. हियरिंग दिस, ग्रैंडमा स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग दैट टुडे दीज बॉयज हैव फॉलन ऑन मी विद देयर क्लाउज. मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई. बट व्हेन or respecting or when hearing out Abba, that is their father, she stopped saying anything and became calm. कॉलेज का वक्त हो गया तो भाई जान अपने सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए. So it was college time. So brother came to the hallway hiding his white shirt from आरिफ सलीम. अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है. सो वॉट ही सेड, द ब्रदर सेड, अम्मी आई विल बी लेट इन द इवनिंग टुडे आई एम गोइंग टू सी अ मूवी विद फ्रेंड्स. खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया. बीवेयर, आरिफ रोल्ड हिज आइज एंड थ्रेटन्ड हिम. कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की. देयर इज़ नो नीड टू वॉच अ मूवी. इम्तिहान करीब है, इम्तिहान मीन्स एग्जामिनेशन, और हर वक्त सैर सपाटों में घूम रहते हैं आप. एग्जामिनेशन इज़ क्लोज एंड यू आर ऑलवेज आउट ऑल द टाइम. पहले तो भाई जान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े. एट फर्स्ट ब्रदर थॉट ऑफ गिविंग अ टाइट स्लैप एंड देन ही थॉट ऑफ समथिंग एंड ही स्माइल्ड. लेकिन हजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए. बट डियर किंग, आई हैव ऑलरेडी मेड प्लान टू वॉच मूवी विथ माई फ्रेंड्स, सो बी काइंड टू अलाउ मी. उन्होंने हाथ जोड़ के कहा. सो ही सेड विथ फोल्डेड हैंड्स, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया. Cancel it, that's it, I will only say once. उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा. He said it very carelessly and sat on the sofa and started looking at the newspaper. उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली. At the same time, आपा, that is elder sister, also came out of her room. एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज आ रही थी. सो शी वॉज ड्रेस्ड इन अ वेरी हैवी साड़ी एंड वॉज रेडी टू गो टू द कॉलेज. आप, सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआयना किया. यू, सलीम केयरफुली इंस्पेक्टेड हिज एल्डर सिस्टर. मुआयना मीन्स इंस्पेक्टिंग और लुकिंग carefully at her. इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? Why have you worn such a heavy saree? शाम तक गारात हो आएगी. Looters will be coming by evening. इस साड़ी को बदल कर जाइए. Change this saree and go. आप वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना. You wear that white saree today. अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म. Enough. You have given too many orders now. आपा चिढ़ गई. एल्डर सिस्टर गॉट इरिटेटेड. हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है. उन्होंने साड़ी की शिकने दुस्त मीन शी इज करेक्टेड हर रिंकल्ड साड़ी. देर इज अ फंक्शन इन आवर कॉलेज टुडे, सेइंग दैट शी करेक्टेड साड़ीज रिंकल्स. हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? लेट इट बी, यू डिडंट हियर व्हाट आई सेड. अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई.
she was so embarrassed to see such a good imitation of her. बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है. So just like this, she asked Arif and Salim to take off their favorite shirts and asked them to wear extremely useless clothes. दूसरी सुबह हुई. So the second morning took place. So the day got over. Everyone was tortured like they tortured them, and the second morning came. सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी. When Salim opened eyes, the elder sister, that is Appa, was waiting for the both of them to get up, and she was decorating the breakfast table for them. अम्मी खानसाना माँ को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो. And mother was was instructing the chef to cook a sweet thing with every meal. अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे. And inside Arif was singing, and with that the elder brother was playing tabla with it. और अब्बा सलीम से कह रहे थे, and अब्बा said to Salim, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है. So while going to school, take a चवन्नी with you. It's okay. So now they all have understood how they were torturing or how they were troubling the kids, because when it came to them, then only they understood how difficult it was for them. So now everyone has changed and everyone have started looking from their perspective. So that's all. What happened? There were two kids, Arif and Salim. So they both were very small, and so every elders in the house used to treat them very badly, and they will always give them orders and too many restrictions. They won't allow them to go out, they won't allow them to sit inside. So one day what happened, both of them made a plan that and presented it to them, their father. They said all the rights of elders should be given to them for one day, and all the elders should be considered as kids and they should listen to them. So father was in a good mood, and he said, okay, it's okay, tomorrow itself take all the rights and let us see what will happen. So in the morning they asked Amma to get up in the morning itself, and they asked her to make breakfast. She was very irritated, but then again she said, okay, now it's I don't have any right today. And then again they jumped on Dadi. They said, Dadi, don't drink this much badam milkshake, your stomach will burst. And they took her badam harari, and there also she also got upset. Then when they reached the breakfast table, the eggs and butter they took, and the oatmeal and biscuits were given to all of them. There also they felt, oh my god, food also we are not getting. So there also the elders got very fuzzy. Then what happened, and also one thing, daily Amma used to scold Salim that go to the bathroom once again and brush your teeth properly. The same Salim did to his mother. He asked his mother to brush properly and come, and the mother was forced to go inside and brush again and come. Then what happened? Then Abba was also scolded for not shaving and dirtying his clothes. So that was also there, and Arif also scolded him when his father was singing his new ghazal loudly with friends. And what Arif said, Arif shouted, just stop it Abba and go to office immediately. And when his father, that is Abba, asked his wife or his mother to give 5 rupees to go to office, what he said, Arif stopped him and he said, why you need 5 rupees? There is already petrol in the car. So likewise, Abba used to scold daily Arif. When he would ask some extra money, he would say, you have already taken pocket money, why you need extra money? Like that, he will scold him. The same way, Arif also scolded him back. Then the chef came, and chef asked what we should cook. Then the kids said that only sweets should be made.
And then Amma said, how we can eat roti with sweets? They said, how we eat curry with roti curry. Like that you have to eat with sweet, because we like sweet and roti, you like curry, but always we are eating chili curries. We don't get sweet. So now you have to do with our wish. Then what happened? Then their elder brother came and he was going to college, and he said to Ammi that today I'll be late. I'll be going to see a movie with my friends. At that time, Arif scolded him and he said, no, you cannot go to movie. Examination is coming by, so you have to stay at home. So again his brother asked him with folded hands, please let me go. But he said, no, cancel it. I will see only once. Then his elder sister came and she was dressed in a very heavy sari, and she was ready to go to a function in her college. But what they said, Arif said, no, you cannot wear this sari, you wear that white sari that you have. No need to wear such heavy or beautiful sari. At that time the sister got very embarrassed, because she used to do the same things to them. She would force them to take off their favorite shirt and ask them to wear useless or bad clothes. So now everyone understood how they felt when they used to do the same things to kids, how they felt. So everyone changed. In the next morning, when Salim opened his eyes, elder sister was making breakfast ready for them. Ammi asked the cook to make sweet with every meal, and his brother, who used to say that don't sing all the time like a frog, now he was joining him by playing tabla with Arif. So they became very happy, and Abba also said to Salim that if you are going to school, take a chavanni with you. It's okay, enjoy your life. That means all of them have changed. All of them have got to know how it feels when they scold or when they irritate their kids, these kids. So I hope you understood the chapter. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.